Hello students, in this video we'll solve question number 1 to 5 of exercise 8.1 chapter 8 introduction to trigonometry. In our previous video we learned what is trigonometry and we learned some basic trigonometric ratios, the description for which has been given in the description box below. Let us see the first question of exercise 8.1. So in question number 1, we have in triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. We have to determine the values of sine A cos A and sine C and cos C. So let us consider a triangle. Suppose this is a triangle given to us. This is triangle ABC. This is right angled at B. So this is the angle 90 degree. We are given AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Fine. So in order to find out the trigonometric ratios, first of all, we should know all the three measurements of the sides. We should know this side AC also. Fine. So how we are going to find this side AC? We know that this is a right angle triangle. So in right angle triangle, when we have to find this side is called the hypotenuse. Why? Because it is opposite to this right angle. So side opposite to the right angle is known as the hypotenuse. We calculate the hypotenuse by using the Pythagoras theorem, which is perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. So here the perpendicular we are considering, let's say that perpendicular is AB and this BC is the base, or you can say this BC is the perpendicular and this AB is the base. फाइन. सो कभी भी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कंसीडर करके परपेंडिकुलर या बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड हो जाता है विच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, और परपेंडिकुलर या बेस आप इन दोनों साइड्स में से कोई भी ले सकते हो. सो हियर वी आर टेकिंग ए बी एज द परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे आ गया ए बी स्क्वायर, बी सी इज द बेस, बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. Now we just have to put the values. 24 square plus 7 square is equals to AC square. 24 square is 576 and 7 square is 49. So this is equals to AC square. So from here we get that AC square is 625. So AC will be equals to, this will be equal to root 625. This is equals to 25 centimeter. Therefore, this hypotenuse here which we have calculated, this is equals to 25 centimeter. So now when we know all the sides of the triangle, now we'll find out the value of sin A, cos A, sin C and cos C. तो अब यहाँ पे फिगर में हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर. So first we'll find out the value of sine of angle A. So sine A we know this is equals to perpendicular upon hypotenuse. We have discussed the definitions of all the trigonometric ratios in our previous video, the link for which is given in the description box below. So sine A is perpendicular upon hypotenuse. Now we have to consider this angle A. So if we are considering this angle A, then angle opposite, the side opposite to this angle, this is angle A and this is the side opposite. So for angle A, this will be the perpendicular. This is the perpendicular for side A. अगर हम A साइड को A एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये BC वाली जो साइड है वो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर. ये हमारा हाइपोटेन्यूज है बिकॉज ये 90 के ऑपोजिट है, लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये फिक्स्ड है. ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो गया है, बेस. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25. तो साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. Next, we have to find the value of cos A. Now, cos A, as we have discussed, is equals to base upon hypotenuse. So, base here is this 24 and hypotenuse is 25. So, this cos A is equals to 24 upon 25. Now, we have derived sin A and cos A. Now, we have to derive sin C and cos C. For sin C, now if we are considering this angle,
अगर ये वाला एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं सी वाले एंगल को, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड सी के लिए अब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, एंगल ही डिसाइड करेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है। हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज रिमेन द फिक्स। तो यहाँ पे अगर हम साइन सी देखें, फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ पे अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर वाज दिस 7 सेंटीमीटर, लेकिन सी वाले एंगल के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, दैट इज ए बी अपॉन ए सी. This is sine C. And for cos C, it is this formula is same, that is based upon hypotenuse. So base here is this 7 and hypotenuse is again 25. So this is 7 upon 25. This is the first question that we have to solve. First we have to find the value of hypotenuse by using Pythagoras theorem, and then we'll find the value of sine A, cos A, sine C and cos C. Now let us see the next question. Now the second question is, in given figure, find tan P minus cot R. Fine, we have to find tan P and we have to find cos R and we have to subtract the values. So this is the figure given here. In this figure, this is angle P, here this is angle R. We are given that PQ is equals to 12 centimeter, this PR is equals to 13 centimeter, and this angle Q, this angle is 90 degree. So obviously the side opposite to this angle, this is our hypotenuse. So this is fixed, the hypotenuse is fixed. Now for finding out the trigonometric ratios, we need to know this side, that is QR. We need to know this measurement, and for this we'll use again the Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem is the perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. So here this is the perpendicular PQ. जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो उसमें हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर हम इस लाइन को भी, इस PQ को भी कंसीडर कर सकते हैं और इस QR को भी कंसीडर कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें ज्यादा अपना जो परपेंडिकुलर है उसको फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम ये एंगल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर को भी फिक्स रख देते हैं. तो यहाँ पे हमने PQ को कंसीडर कर लिया है परपेंडिकुलर एंड QR इज आवर बेस एंड PR इज द हाइपोटेन्यूज. विल पुट द वैल्यूज. PQ इज 12 square plus QR that we have to find. This is equals to 13 square. So 12 square is 144. This we have to find, and 13 square is 169. So from here QR square will be equal to 169 minus 144. QR square is 25 and QR is root 25, that is 5 centimeter. So this is how we are calculating by using the Pythagoras theorem. We'll find the value of this base here, that is QR. So next we have to find these values, tan P, cot R, and we have to subtract them. So first we'll find out the value of tan P. So tan P, we know that this is tan of any angle is perpendicular upon base. So if we are considering this angle tan P, तो अगर हम ये एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसके ऑपोजिट वाली साइड को हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर. तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, QR, एंड इसका बेस क्या है, PQ. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan P की वैल्यू. तो QR हमने कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारे पास tan P की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अपॉन 12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जो भी एंगल कंसीडर करना है उसके सामने या उसके ऑपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर. तो P के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बेस. Now we have to calculate cot of angle R. अब अगर हम एंगल R को कंसीडर करते हैं तो इसके ऑपोजिट वाला ये जो साइड है, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर. This is hypotenuse and this QR will be our base. So this is our perpendicular. So cot R, you can say it is equals to base upon perpendicular. So base here is QR and perpendicular is PQ. This is again 5 upon 12. So tan P is equals to 5 upon
12 and this cot r is also equals to 5 upon 12. Now we have to subtract the values. When you will subtract tan p minus cot r, you will get 5 upon 12 minus 5 upon 12, that is 0. So our answer for this question is 0. That is tan p minus cot r, for this figure it is equals to 0. So I hope this question is clear. Let us see the next question, that is question number 3. Question number 3 is, if sine A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. So here we are given a value, that is we are given a trigonometric value, ratio का एक value हमें given है, that is sin A is equals to 3 upon 4, और ये दो trigonometric ratios की value हमें find out करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम यही ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल में यहाँ 4 लिखा है एंड यहाँ पे 3 लिखा है. तो ये मैंने कैसे लिखा है, हमने ट्राइंगल कंसीडर किया, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, एंड नाउ वी नो दैट साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पे हमें वो किसके इक्वल गिवन है, 3 अपॉन 4 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, एंड ये जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या है, 4. ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए से हमने जो वैल्यू गिवन है उससे हमने पता लगा लिया कि हमारे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज उनके क्या मेजरमेंट्स हो सकते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने साइन ए कैलकुलेट किया, अब ये एंगल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट ये जो साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. इसलिए मैंने यहाँ पे BC पे हमने क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस AC एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए पहले हमें ये साइड AB को कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. Again, this is BC square plus AB square is equals to AC square. BC, the value is 3, that is 3 square, plus AB square is equals to 4 square. When you will calculate this, you will get AB square is equals to 9, or AB square is equals to 7, or AB is equals to root 7. You need not have to calculate this value in decimals. नहीं करेंगे तो you will leave it as such. You can leave the value as root 7 only. So here we got that the value of AB is root of 7. So this is root 7. Now we'll calculate the value of cos A and the value of tan A. This is the figure, that is ABC. Now AC here is 4 centimeter, BC here is 3 centimeter, and this AB we have already calculated by using the Pythagoras theorem, that is root 7 centimeter. So first we have to calculate the value of cos A. So cos for any value, for any angle, the value is equals to base upon hypotenuse. Fine. So for cos A, अगर हमने एंगल देखना है तो हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, A. तो ये एंगल जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट ये जो साइड है, दैट इज BC, तो ये साइड क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज. ये तो फिक्स ही रहता है सारे ट्राइंगल, सारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये 90 के ऑपोजिट साइड है, और ये क्या हो जाएगा, बेस. दिस इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर बेस. तो अगर हमने cos A की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है तो cos A की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारे पास क्या है, दिस AB, एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस AC. तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बेस इज रूट 7 divided by hypotenuse is 4. So the value of cos A is root 7 upon 4. Similarly, if we have to find the value of tan A, so tan for any angle, it is defined as perpendicular upon base. Fine. So perpendicular here is, the angle is same, tan A ही consider कर रहे हैं. तो यहाँ पे perpendicular क्या है हमारे पास, this BC is the perpendicular and base is this AB. तो यहाँ पे हमारे पास perpendicular में क्या आ जाएगा, 3, and base is our this. So this is upon root 7. So the value of tan A is 3 upon root 7. So this was question number 3. So I hope you have understood the first 3 questions we have discussed so far.
Let us move forward to our fourth question. That is, given 15 cot A is equals to 8. So this is an equation given to you, that is 15 times cot A is equals to 8, and we have to find the value of sine A and secant A. So let us see, if we have this triangle, first of all we have to solve this equation. So for solving this equation, ये हमने यहाँ पे values already लिखी हुई हैं, तो ये हमने कैसे calculate करी है, by solving this equation first. तो यहाँ पे equation क्या है, 15 times cot A is equals to 8. तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 8 अपॉन 15. ठीक है, और हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी किए थे तो हमने कॉट ए को कैसे डिफाइन किया था, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. So if cot A is base upon perpendicular and this is equals to 8 upon 15, that means for angle A, अगर हम एंगल A कंसीडर करते हैं तो उसके ऑपोजिट ये जो साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. दिस साइड इज अवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है, एंड दिस विल बी अवर बेस. तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बेस. तो कॉट ए से हमें ये पता चल गया है, जब हमने उसकी डेफिनेशन डिफाइन उसका फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बेस की वैल्यू कितनी है 8 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 50. So perpendicular here is 15 and base here is 8. So now when we have to calculate this, again we'll use the Pythagoras theorem. So when we apply the Pythagoras theorem, that is AB square plus BC square is equals to AC square, because AC is our hypotenuse. So this is 8 square plus 15 square is equals to AC square. 8 square is 64, 15 square is 225, and this is equals to AC square. तो यहाँ से AC square हमारा आ गया 289 के इक्वल. So AC will be equal to root 289, that is 17 centimeter. Fine. So that is why we have written here 17 centimeter. Okay. So by using Pythagoras theorem, first we'll calculate this AC. And now when we have find out all the three measurements of this triangle and we know the perpendicular and hypotenuse and base, now we'll find out the value of sine A and secant A. So first we have to calculate the value of sine A. Now this is the triangle given to us. We have already found this hypotenuse here, the value of this hypotenuse. So sine A is perpendicular upon hypotenuse. So this is our angle A. तो इसके opposite ये side क्या है, perpendicular. This is our base and this is our hypotenuse. So sine A is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular here is this 15 and hypotenuse is 17. So here we can write that sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse, that is 15 divided by 17. Fine. So this is the value for sine A. Next is secant A. The value of secant A is hypotenuse upon base. Or what you can do, you can first find out the value of cos of angle A and then you can reciprocal the value. So if you don't want to do that, you can directly do with the value of secant A. The value of secant A is hypotenuse upon base. So hypotenuse here is 17 and base here is 8. So the value will be equal to 17 divided by this base is 8. So secant A is equals to 17 upon 8. Sine A is 15 upon 17 and secant A is 17 upon 8. Now let us see question number 5. So question number 5 is, if secant A is 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios. So all other trigonometric ratios is you have to calculate the value of sine of angle A, cos of angle A, then tan of angle A, then cot of angle A, and then cosecant of angle A. Secant A, the value is already given to you. So when we solve it, first we'll see how we have to find the value of hypotenuse, base, and perpendicular. So if we are given this secant A is equals to 13 upon 12, and we know that secant A is equals to hypotenuse upon base. So
From here we can say that 13 is the value of hypotenuse and 12 is the value of the base. So this is our angle A. Side opposite to this angle, this will be our perpendicular, this will be our base, and this will be our hypotenuse, because this is opposite to the right angle. So this is our hypotenuse. So here we are given the hypotenuse is 13 and base is 12. So again we'll calculate this value using the Pythagoras theorem. So when we apply Pythagoras theorem here, we will say that this BC square plus AB square is equals to AC square. Fine, we'll put the values again. BC, this is the value that we have to find. 12 square is equals to 13 square. So this is 12 square is 144 and 13 square is 169. From here we'll get that BC square is equals to 25 or BC is equals to 5 centimeters. So here we have got that this side BC is 5 centimeter, and because this is opposite to this angle A which we are considering, so this will be our perpendicular. This is our base and this is our hypotenuse. So next we have to calculate all the trigonometric ratios. Now when we have find out all the measurements of the three sides of this triangle. So first trigonometric ratio is sine of angle A. So sine of angle A is defined as perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular here is this side BC. Why? Because angle A is in consideration. Again, I am telling that whatever the angle is in consideration, you have to consider that side which is opposite to this angle as the perpendicular. So here this is the perpendicular, this is the base, and this is our hypotenuse which is fixed, and this is equals to 13 centimeter. So here sine A is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular here is 5, that is BC, and hypotenuse is 13. So this is the sine A is equals to 5 upon 13. Next is cos of angle A. Cos of angle A, cos is defined as base upon hypotenuse. So base here is 12 and hypotenuse is 13. So cos A is equals to 12 upon 13. Next is tan of angle A, that is perpendicular upon base. This is, so here perpendicular is 5 and base is 12. So this is equals to 5 upon 12. Now the next trigonometric ratios, you can use the formulas. जैसे यहाँ पे हमने cosecant A के लिए formula use किया है hypotenuse upon perpendicular, और what you can do, you can directly reciprocal, जो ये value है sin A का, इसको हम directly reciprocal कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, cosecant A. ठीक है, क्योंकि हमें पता है that cosecant A is reciprocal of this sin A. So cosecant A define करेंगे, this is equals to hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is 13 and perpendicular is this 5. So cosecant A is 13 upon 5. Next is secant A. This value is already given in the question. This was given to us, but if you have to find it here, you can say that this is equals to hypotenuse upon base. This is 13 upon 12. Next is cot of angle A. You can directly reciprocal the value of tan A, or you can write this is equals to base upon perpendicular. So this is equals to 12 upon 5. Fine. So I hope the first 5 questions are clear to you. Thank you. Like, subscribe and share, and hit the bell icon for further notification.